So to call started. Indrajit, you want to say something? Indrajit. No, it's okay. Cool. Cool. So yeah, thank you everyone for joining, and I hope ki you already gone through the first session, and I'm assuming the same. So let's start with the project. Okay, so I would recommend ki who is completed almost or done with that. I think Imran, right? Imran, or who? Oh, yeah, I've completed. Yeah, so Imran, it would be great if you can share your screen and just go through your code and just present the project. Are you using right now on Mac? You joined this meeting from Mac, right? Then that would be great. Imran, you're on mute. Could you please do that if it's visible for you right now? Yeah, sure, I'll do. Cool, perfect, perfect. Yeah. So first we'll go through the project and then we'll come to today's topics. And again, let me again repeat key we're not going to follow a tutorial trap approach or a very childish or school or college level approach. No, we are software engineers, we are pretty experienced, we are pretty mature. So we'll do through a mature approach, okay, or a software engineer level approach, okay. So basically that means we are going to figure out the things Oh, is it ourselves. visible? Right? Yeah. Imran, yeah, it's visible. So just a minute. So basically the point is key we are going to things figure out on ourselves also, and also the way we do in the companies, right? So mostly in product based companies or in decent service based companies as well. So yeah, Imran, yeah, next to you, you can first what you can do first run your project and first show the simulator, and then we'll dive into the code part. Just a minute. Like, Yeah, sure, take your time. No. In the meantime, I will say other people also, whoever has started at least. Let me check in the group. They voted for, right? Let's go into the poll once. Mm, yeah, here's the poll. So around four people started at 20%, 50-70% are three people. Tarun, Parul, and Vikram all are here. You can raise your hand once. Nikhil also almost completed. Nikhil is there. And I don't know, my other, simulator is not working, so I'll just open that view. So one by one, I'll go through that. So cool, if no we, problem. Mm, yeah, Imran. Yes. maybe it's No, not a problem. You can go through either preview or you can directly go through code and quickly you can no explain. in runtime. It's not showing simulator. I have done in office time. So here Okay, in okay. my lab, it's not showing. No problem, no So problem. Mhm. So what approach you have taken and what design pattern you are so following in that or architecture pattern? as of now, I have not followed any design pattern. I Okay. have just build a UI and I Mm-hmm. have to refactor it. So many places I'm using same modifier, but I have to refactor and create a separate modifier of that. Okay. Yeah. So just tell me one or two lines. Okay, what do you think? Like first time you have tried SwiftUI or what? No, before that I have tried, but I basically I stuck in data binding and the Mm-hmm. design pattern. The UI part I'll Cool. do. Yeah. Okay. But okay, cool.
And what about you find like, have you enjoyed this to try this out? What your experience? Uh, yeah, it's pretty awesome. Like it takes Mhm. less time to develop any application, and it is easy to understand. Like what we want, we have to write that one. Yep. Mhm. Cool. Sounds good. Sounds good. Uh, you can show the navigation part. You are doing navigation, right? How you're doing navigation in your Uh, project? I'm using a navigation stack. Okay. You can show the code once from where Yeah, you're sure. doing. Yep. So in Okay. the application part, I'm using navigation stack. So whole view will Okay. be inside a navigation stack. So Mm-hmm. whatever view I'm adding, by default it will be inside a navigation stack. So Okay. and for navigation, I'm using navigation link. Okay. There is no condition. How this navigation link works normally? Normally there is we have to give a destination and a Mm-hmm. label for that. So when we click on that label, it will go to the respective destination. In this case, I am giving a login view, so it will jump to the login view. And here we have given all the state field like email, password, and is secure. And for JDSTech, we are giving so that we'll get that background color. And we are Mm-hmm. giving background color and giving ignore safe area. And here we are hiding that toolbar so that whatever design we have given in the sample, we can achieve. Okay. Okay. Sounds good. And so after that, we have given a particular step which Mm-hmm. containing, here is a lot of code, but I have to restructure. This is a header part which contain the welcome message and some other text message. And Cool. if Cool. all those Mhm. things, so button is there for sign in. If forgot password, that is also navigation Mhm. link. And if somebody is clicking on that login button, it will go to root view. Root view Mhm. is basically it is containing a tab view. Whatever the Yeah. design is given, it is not as per the design, Yeah. but Yeah. it Mhm. is uh, fulfilling the purpose to have all 5 tabs. So which is Getting it. having a which is Mhm. having home view, and we have given a value so that we will get that selected tab. So when we are clicking Cool. home Cool. view, Cool. it will be selected tab will be 0. When we are clicking Mhm. company grid view, it will be like uh, your selected will be 1, and it will show that company grid view. And same way we have a create job view. So Okay. there Fine. I I was think. I facing think. Uh, Sorry to interrupt, but I think that's it. We got the brief context. We move to other candidates also. So yeah, but good job and good so understanding. one issue is there like in Mhm. profile. I'll just show you like there I'm getting it's not coming as per the UI. Just In the meantime, guys, I have launched again the one poll to rate your current software level. And I given the 4 options: 1, 5, 8, 10. Again, 1 is like you haven't tried software, kind of. 5 is like very basic understanding. 8 is like you have decent level in software, and 10 is like you're pro in software. So everyone, please vote in the poll. It's mandatory and it's compulsory, and it's really helpful for uh, us to understand the whole audience understanding. Yeah. Yes, Simran. yeah. So in language in profile there is a one section called language. So there we have Mm-hmm. to show some language. And Mm-hmm. I tried that one, but I am not able to achieve what it is there in the UI. Like, I tried Okay. like UI, what you are trying and what is facing. Cool. No problem. We'll discuss this later on. No issues.
And I think some basic thing you're missing. No problem, but eventually you will get it. So yeah, Yeah, yeah. You can stop your screen. And yeah, also I sure. will go with one more person. I think anyone else? Meanwhile, I'll Yeah. share the link. Yes. The sorry, Imran, you saying the code one? The code Yeah, or I'll share the GitHub code link GitHub you can by share. Yeah, tomorrow. yeah. Yeah, Cool. Take your time. Even though eventually we need to convert this project or your codes, you need to actually implement in the proper design pattern you need to follow, kind of, or the best practices. So again, you need to rework on the code part so that it's better again for practice and understanding. Okay, yeah, so sure. yeah, I think next is Nikhil is there. Nikhil, Yeah, hi. yeah, Nikhil, just one question. You've said almost completed. So, any previous experience with SwiftUI? First time tried? What is about? Just brief about it once. Yeah, actually, like I am not a full-time iOS dev, so Mm. just Okay. kind of I am kind of a hobbyist. So Mm-hmm. not a like I don't have any extensive knowledge, but I have done some personal projects. So Okay. I would even rate myself like more than 4 or 5. I'm getting But you. yeah. No problem. Okay. Cool. No problem. No problem. And this, what about Tarun, Parul, and Vikram? You almost done 50 to 70%. So basically, my concern is like the thing. If you are the people like you haven't tried SwiftUI, then eventually after our session and then you again start trying these things, so how was your experience? You now feeling much better that at least we know a basics of UI kind of, or we can build something? That I'm basically asking. So anyone can add on this, whoever tried or started with the assignment or the task. Anyone? Hi Kushal, Parul this side. Yeah, Parul, hi. Yeah, so actually before some time I have started at least learning Swift UI. It's Mhm. not like I'm completely new in that, but yeah, with this activity at least I'm getting a much more idea. Yesterday with actually first session I actually I missed that session, but with recording I got to know about certain things which I was completely unaware, like how we can do use this view modifier and all that stuff. So though I was doing a kind of a theory part, Mhm. but to see in a kind of in a project where we can reuse those things, it wasn't quite fun for me at least, and that's how I have started. And sorry for one thing is actually I have just seen that message that okay, we have to do a kind of a basic Swift UI project. So Mhm. I have implemented a different project where I'm just calling an API or something. Mhm. And today only I got to know that okay, you have shared something kind of an view or something. So I have started on that part also. It's quite not representable one, but if you want I can show you the kind of an API No, one. no, no problem. But just I want to know your experience and how you feel regarding software. So Yeah. cool. If you want, I can share you about an API one which I have done it. If you Cool, want. guys, because yeah, we need to take session. So, but in the meantime, you guys please push your code on GitHub repos and then share the Yeah. repo link in the group so we can review it later. Okay. Okay. Also, try to attach your screenshot screen recordings in the README file so that we can quickly go through the screenshots and recording, and then we can go through the code as well. So cool. Thanks, Parul. And okay, so let's start with. So I've run a poll again. Uh, Today, so many people are again first timers, kind of. So only 15 people voted out of 45 people. So guys, please go in the poll section and quickly vote. What's your current software level? Please vote. You have 1 minute. Please vote. Or maybe 10 seconds is also fine. But yeah. So
So basically, we want to know the context. Like, we got actually major wider audience context. Ki people are very at the beginning level or a basic understanding, or they are already at pro. So we should know about this. So a roughly idea we can get this. So that's why I run the polls, these kind of polls. Yeah, hi Kusal. So I'm Yeah, not able to find the where is the full section. poll section. Okay, someone can guide because right now from my side, I'm the creator of the poll. So, but anyone else who can tell Gopal where to find the poll? Gopal, see downside, you will be able to see one chat option is there, right? Yes. After that, there is one menu option is there, meeting tools. Go Yes. there, there will be poll will Yeah, be yeah. there. Yeah, okay. Okay. Great, thanks. Thank you. Yeah, Welcome. thanks. So total still 27 votes. Again, almost half or 60% audience voted. 30-40% people are okay. Let me clear you. This should be more interactive and more involvement is required. Only then it makes sense to do these kind of sessions. Otherwise, it doesn't make sense. So please be involved and be active and please respond. So yeah. And again, one more thing I would recommend to on your cameras if you can. It would be great. Else no worries, but yeah, it is recommended. So but at least go cool. Yeah, yes, Aditya. Hi, hi sir. I think Yes. the poll was released by you by the before I added in the group. That's why I'm not able to Okay, find that exactly poll. maybe that could be the case, but if that is the case, then you in the chat section you can simply write your rating on SwiftUI like out of 10 simply. That is fine. Okay, so we got the 32 Okay. votes so far. Yeah. So I'm hoping almost people voted, but still few people haven't voted. So let me give you the like summarize this thing. So like 20 per like mostly 50% audience or more than 50% audience is at 1 and 5. Basically, either they haven't tried software or they are at very basic level at software. Okay, and only 5 votes for 8. So they have like decent understanding and no one at 10. So cool 10 we are not expecting at all, but our goal is to everyone should be at 8. Okay, that is our goal basically. So all 1 people and 5 people. तो यहाँ पहुंचने the target ये है अपना कि we need to reach at the level of 8 a decent understanding of software. what I what do I mean by decent understanding? Let's come to that. Let me end the poll. Okay, we are done with that. No problem. Sorry, excuse me. So what I mean by decent understanding? So I'm assuming all are from iOS background, Hi, all wicked people. hi, Khushal. Yeah, Hi, yeah, Nitesh. Nitish. Sorry to interrupt. So I just wanted to understand. Actually, I haven't joined, last two videos. I was hospitalized, but yeah, I have joined the, channel. I followed some, previous tutorial, just 5-10 minutes, not more than Yeah. that. So I Okay. just wanted to understand, like, are you creating any kind of blog where I can find all the links which you have posted, like assignments or Yes, so? yes, we do have. I will share, and I will come to this part later on. But let me first complete the content part, then we'll come to these things. No, Cool. no. So what I'm trying to understand, though I Yeah. have missed, some channel. See if I able to find things serially somewhere, so I can go and Yeah, follow. I'm saying yeah, I will share all the lists and links we have. And right now, we just started with the session today. We are just discussing the assignment part so far till now. And in the first session, this is actually second session of SwiftUI. And previously, we had 6 sessions on multi-threading and GCD and dispatch queue and all that part. So that Okay, is not relevant in this context. So so far the SwiftUI started. We just only one session. This is the second session. okay, So okay. Got it. Yeah, and I am not sure about the assignment. So if you can share the details, so maybe yeah, I. you will get the details in the group. You are in the group, right? Yes, yes, I You am in the group, but I missed as I was hospitalized.
So I have, No, no not. problem. We'll share again. We'll share again. Sure. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Yeah. So yeah, I'm saying कि what I mean by good, okay, or decent level in the SwiftUI. So okay, we have a target कि हम लोगों को सबको वो 8 वाले figure पे पहुंचना है. We need to मतलब that much confidence that we can vote for 8. Okay. So the point is हम लोग I'm assuming कि everyone from iOS background, right? And kind of iOS background we are assuming. So all are UI kit people kind of. So what we do in normally in UI kit कि हमको UI kit में कुछ भी दे दो हम easily बना लेंगे like right. If we give anything or we come across anything in UI kit, we can build any kind of UI. We can build any kind of animation, any kind of anything like basic stuff or complex stuff. Anything we can do easily because we are used to it. We are so mastery in that thing from last like 5 year, 10 year, or 15 years we are working almost. Because here again I say the crowd has having even few freshers and then 2 3 year experienced people, 5 year, 10 year, and even 12 or 13 years as well. This kind of audience is there right now in the group. So the point is ki, as far as my is concerned, I have around 9 years of experience. And let me quickly brief about myself because so many like today again new people are there, so they don't know me actually. Cool, no problem. Basma. So this yeah, so basically I'm Kushal and I have total experience around 8.5 years. And currently I'm working in Abu Dhabi from last 2 years, and I'm from India, Rajasthan. So yeah, and I'm the founder of Intel Labs also. It's a tech community initiative, and this iOS Labs, which I recently started for iOS specific people. And yeah, that's it about me. So the thing is, SwiftUI का जो एक fear एक डर है that we need to actually cancel out, or there is something in the mind. So again in the first session I have covered this thing. Again I'm repeating that line कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. There's nothing to fear about it, or there's nothing to overthinking about it. That it's, if you see in a different perspective, SwiftUI is more easier than UI kit, but depends because it's very subjective. Because we are so much comfortable with UI kit, then so that's why हमें UI kit ज़्यादा easy लगता है. We found UI kit a bit pretty easy as compared to SwiftUI because we are very comfortable with UI kit. We are very uh, used to it, or very day-to-day practice and all that thing. But again that's the main point कि हमने SwiftUI के साथ practice ही नहीं किया है. We haven't that much invested time in the SwiftUI. That's why it feels like it's right now a uncomfortable zone, right? Am I right? You can thumbs up if you are relating to me. Yes, you're right. You're Yeah. right. Yeah. So the point is कि it's only the thing is कि we haven't spent so much time. That's why we are uncomfortable. First thing. Second thing, now the thing is, if you see the learning curve in UI kit, if you take like around example roughly ki 6 7 months or 1 year to make that pace and the comfort level or comfort zone in UI kit when we started in our careers, like 5 years back, 10 years back, or 2 years back, whatever. But right now, again, we are not pure freshers, we are not juniors, we are not college or school students. So the point is now, if you start with your career again, or you start with your again a new tech stack, like my point is, it will take very less time because you are very good at the basic fundamentals of front end, back end, and all that thing. So what is all about front end? If I talk in very very hyper view level, or very a big picture view, or so what is all about app? Basically you're simply calling APIs, you're getting the data and you're populating the data, and you're listening the user events. If you I'm talking in very general, very basic context. I'm not going into the edge cases, but the point is normally what we are doing in our apps, we're simply calling APIs, we are getting the data, and we are populating in some format, right? So it's all about in which format you are displaying. So right now if you see, we are connected over Google Meet. Okay, I'm connected with the web, but maybe you connect with the mobile also, right? So if you see all the tiles are there, you see the list of the names, right? So basically Google Meet giving you the data. There are some APIs, there are some streaming APIs, RPC protocol or whatever it is. Basically APIs, you're getting the data, they're displaying it. Then there are some controls, there are some buttons. On every button you're calling some function.
you're doing something right that we do normally in the app, right? In our day-to-day development, right? Am I right? You can thumbs up if I'm right? So the point is, in general, यही कर रहे हैं हम लोग, एपीआई से डेटा ले रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को, बस, और कुछ प्रोसेस कर देते हैं, कुछ थोड़ा थ्रेड स्विचिंग कर देते हैं, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं डेटा को. मतलब वो अगेन ऑप्टिमाइज वाला चीज है कि आप हाउ यू आर एक्चुअली हैंडलिंग योर डेटा इन ऑप्टिमाइज मैनर, हाउ यू बेसिकली स्मूथ यूआई एक्सपीरियंस दे रहे हो, आप लैग तो नहीं आ रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट करते हो थोड़ा बहुत, ये सब चीजें होती है, राइट? और थोड़ा एनिमेशन वगैरह डाल देते हो, यही चीजें होती है, राइट? बेसिकली अगर मैं बड़ा मोटा चीज कहूँ तो, और अगर लोकल स्टोरेज वगैरह यूज कर रहे हो तो आइदर यू आर यूजिंग कोर डेटा और स्विफ्ट डेटा और सम अदर स्टफ, राइट? बट द पॉइंट इज, यही सब मोटा चीजें हो रही है. और फिर अगेन इफ आई टॉक अबाउट यूजर डिफॉल्ट की चेन वाला थिंग, तो इस तरह की चीजें भी आप यूज करो, इन्फो प्लेलिस्ट एंड ऑल, टू मेंटेन सम some default values or some local cache thing and all that thing. Okay, so far हम लोग यही करते आ रहे हैं iOS में. अब द पॉइंट इज, iOS के बेसिक फंडामेंटल चेंज नहीं हुए हैं. ओके, सो डोंट थिंक कि SwiftUI is like completely different, entire new world. Also, it's not entire new world. It's just a UI framework. Okay, तो अभी भी जो आपके बाकी बेसिक फंडामेंटल्स है आर स्टिल सेम ऑफ द iOS फंडामेंटल. इट जस्ट कि अभी तक हम UI किट में, जैसे अगेन वी डिस्कस इन द लास्ट सेशन, अभी तक हम वो लेबल लेते थे, टेबल व्यू लेते थे, इस तरह की चीजें, और वो कंट्रोलर बना के डेलीगेट सेट करना और वो सब इम्प्लीमेंट करना. नाउ दिस होल थिंग एक्चुअली एक थोड़ा सा अलग वे से कर रहे हैं अप्रोच. थोड़े कंपोनेंट्स बदल गए, नाम बदल गए, थोड़ी अप्रोच बदल गई है. सो पहले वो थोड़ा इंपेरेटिव वाला सीन था, अभी डिक्लेरेटिव में आ गए. तो डिक्लेरेटिव में बेसिकली हम वो पहले डिफाइन कर रहे हैं चीजों को, स्टेट वगैरह डिसाइड हो जाती है, उस हिसाब से डेटा आप मैप कर देते हो, एंड देन वो रेंडर करता है उस अकॉर्डिंगली. और यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस, और द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूआई किट एंड SwiftUI इज लाइक कि आपका SwiftUI में all other views are struct or value types, right? You already I think aware about it. तो यहाँ पे सारे व्यूज वैल्यू टाइप्स है, लाइट वेट है, रिक्रिएट करता रहता है व्यू को, बार बार रेंडर करेगा, कुछ भी वैल्यू चेंज होगी तो. यूआई किट में ऐसा नहीं था. यूआई किट में रेफरेंस टाइप है, राइट? यूआई किट में यूआई व्यू अपना क्लास है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पर यहाँ पे मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये आ रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ का फंडामेंटल इज द की मेजर डिफरेंस इज कि SwiftUI पूरा उस पर टिका हुआ है, स्ट्रक्ट वैल्यू टाइप पे टिका हुआ है, और वहां पे वो आपको थोड़ा डेटा बाइंडिंग वगैरह दी है जो कि यूआई किट में नहीं है अपने पास. फिर हम करते हैं अलग तरीकों से, बट मैनुअली चीजें करनी पड़ती कई चीजें. इसमें इन्होंने, एप्पल ने खुद आपको बोला कि भाई तुम अब इतना तामझाम मत करो, वी गिवन यू सम फीचर्स, सम ऑप्शंस इन SwiftUI, you can easily manage your data and states and all that thing. But in UI kit we used to do in some other way, either we are using RxSwift or we using property wrappers or some other stuff, depends, or observer or something like that, right? Yeah, Priya, yes. Parul. Yeah, see Kushal, I do have one question is कि जब हम लोग SwiftUI में करते हैं तो वो व्यू रेंडर करता रहता है, करेक्ट? अगर कुछ भी अपडेट हो रहा है तो हाउ दैट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन विल वर्क ऑन दैट? क्योंकि जब भी मैं लाइक SwiftUI पे लाइक रीड करना स्टार्ट करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, एवरी टाइम दिस क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड. ऐसा आपने इस पे कभी ढूंढा, आंसर देखा, कोशिश करी ढूंढने मैंने की? इतना ट्राई नहीं किया है उस पे, मेरा सिर्फ कंसर्न वहीं पे है. हाँ, बुरा मत मानना, यहाँ पे कोई भी आंसर्स नहीं मिलेंगे. नो आंसर्स कैसे, सोचते कैसे, इस पे ये सारा चीज. ओके. तो एक्चुअली आप लोग नहीं, लिटरली बुरा मत मानना, नहीं बट नहीं हम लोग चाह रहे हैं कि हम स्ट्रांग बने. अगर मैं डायरेक्टली आंसर दे दूंगा तो उसमें आप एक्चुअली स्ट्रांग बनोगे. ठीक है, तो पॉइंट इज कि आप पहले तो खुद का थॉट दो कि क्यों एप्पल कह रहा है कि यार SwiftUI लाइट वेट है, ऑप्टिमाइज कर दी है चीजें. अब उसमें अब अगेन कुछ लूप होल्स हैं, हम उस पर बाद में आएंगे. देयर आर सम लूप होल्स जहाँ पे यूआई किट आपका बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू SwiftUI. इस पे अच्छी केस स्टडीज डले में, आप थोड़ा सा R&D करोगे, और इवन आई एक्चुअली शेयर यू विद सम आर्टिकल्स. पर बेसिकली लिंक्डइन से लेके स्टैक ओवरफ्लो और medium.com पे आपको अच्छे खासे इस पे आर्टिकल्स और डिबेट्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग दैट एज केसेस व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. पर अभी हम एज केसेस में नहीं जाएंगे, अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं. नॉर्मली एप्पल ने ऑब्वियसली कुछ ऑप्टिमाइज वाली चीजें दी हैं, कुछ बढ़िया लेकर आए, तभी रिकमेंड कर रहे हैं वो, राइट? तो ये आप पहले तो खुद से थोड़ा R&D करो. इस पे हम ये इनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. पर मैं आप लोगों से आंसर चाहता हूँ, मैं नहीं दूंगा आंसर, ठीक है? तो point ये, ठीक है?
अभी अगेन, क्योंकि सीरियसली मुझे लगता है कि मैंने जो अप्रोचेस फॉलो करी है, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे अप्रोचेस फॉलो करवाई है, वो लिटरली वर्क करती है। मुझे लगता है आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अप्रोच फॉलो की होगी अपने करियर में, कि आपको सीनियर कुछ बता नहीं रहा, बस वो थोड़ा सा वो गाइड कर देंगे, थोड़ा सा डायरेक्शन देके बोलेंगे खुद से करो भाई, ठीक है। तो ये चीजें बहुत सही वर्क करती है और उसमें हम एक्चुअली स्ट्रांग बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली स्विफ्ट यूआई को सीख रहे हैं, और यहाँ पे सेशन में सिर्फ डिस्कस करने आ रहे हैं और चीजें थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा सा माइंडसेट लेने आ रहे हैं। ये समझो आप, हम लोग ये इट्स नॉट अ टिपिकल क्लासरूम सेशन नहीं है ये, इसको ऐसा लेना भी मत आप। मैं बैठ के बोर्ड लगा के ऐसे नहीं करवाऊंगा, मुझे लगता है कि वो इतनी बेटर अप्रोच नहीं है। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, पर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, इस बात को समझना आप। और इवेंचुअली आई थिंक लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि हाँ यही सही या बेस्ट अप्रोच है, या और उससे बेटर अप्रोच है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो द पॉइंट इज अगेन बैक टू दिस थिंग कि यूआई किट एंड स्विफ्ट यूआई का एक मेजर डिफरेंस रेफरेंस एंड वैल्यू टाइप वाला। दूसरा आपको यहाँ पे डेटा बाइंडिंग वाली चीजें दे दी। तीसरा आपको स्विफ्ट कॉन्करेंसी की चीजें बहुत स्मूथली इंटीग्रेट वाली चीजें मिल गई है, ठीक है। यू हैव लाइक दिस असिंक अवेट। अब मैंने इसका अगेन लास्ट सेशन में भी डिस्कस रिगार्डिंग दैट कि वो एक जो अपना नॉर्मल कोड होता है उसको इतना इजीली 4 लाइन में वो बदल गया था और इतना इजी टू रीड कोड हो गया था वो। हैव यू रिमेंबर्ड? मैं अगेन आई कैन शेयर दैट डॉक, उसी डॉक में होगा वो, लेट मी ओपन इट क्विकली। सो द पॉइंट इज कि चीजें इजी करी है एप्पल ने। ऑब्वियसली दे ट्राई टू मेक द कोड क्लीन कोड, ठीक है, बेटर ऑप्टिमाइज क्लीन वाला चीज किया है, जो कि यूआई किट में नहीं कर पाए थे इतने सालों तक। वहां पे ऑब्वियसली यू कैन चेंज होल थिंग, राइट। यूआई किट ऑलरेडी बिल्ड वेरी मैच्योर फ्रेमवर्क, ठीक है, या फिर डिस्पैच की और ये सब चीजें, इनको अब ऐसे बदलोगे नहीं, है बदल नहीं सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है इनको ऐसे ही रहने देते हैं, डोंट चेंज द एग्जिस्टिंग थिंग्स जो कि ऑलरेडी वेरी मैच्योर। तो स्टार्ट विद द न्यू थिंग्स, विद न्यू इम्प्लीमेंटेशन, विद मोर क्लीनर अप्रोच एंड विद न्यू कंसेप्ट्स, ठीक है। तो इवेंचुअली एक और ये भी चीज है, कई चीजें उसके ऊपर ही बिल्ड करी है, जैसे स्विफ्ट के कई कंपोनेंट्स है जो यूआई किट के ऊपर ही बिल्ड हुए हैं, या स्विफ्ट कॉन्करेंसी की कई चीजें हैं जो कि डिस्पैच की और एनएस ऑपरेशंस के ऊपर ही बिल्ड हुई है, ठीक है। पर द पॉइंट इज कि अपने को एक एब्स्ट्रैक्शन फ्रेमवर्क मिल गई है। इंटरनली कैसे कर रहे हो उससे अपने को उतना लेना देना नहीं है। वैसे वो भी पता होना चाहिए, कुछ हद तक पूछ लेते हैं कभी कभार इंटरव्यूज में, पर ठीक है, दैट्स फाइन। वो बहुत बहुत रेयर हो गया, या मैं बहुत डीप डाइव की बात कर रहा हूँ, बट डोंट गो इनटू दैट। बट द पॉइंट इज कि यू शुड नो कि असिंक अवेट कैसे काम करता है। और असिंक अवेट अगर अगर आपको डिस्पैच क्यू, अभी हमने पिछले 6 सेशन में डिस्पैच क्यू किया था, डिस्पैच क्यू और एनएस ऑपरेशन और ये डिस्पैच सेमाफोर और ये सब चीजों में इतना तामझाम करते हैं हम लोग, तो असिंक अवेट तो फिर बहुत ईजी है। इट्स लाइक कि आपने पहले डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स चीजें देख ली, तो नाउ इफ यू कम टू दिस थिंग यू विल फील कि इट्स मोर लाइटर, more cleaner version of all that old stuff. ये you eventually you will realize this. तो आई होप अगर कुछ लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो हम सब कर सकते हैं इस चीज पे, कि इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि ओल्ड स्टफ से बेटर है अभी स्विफ्ट यूआई, और स्विफ्ट कॉन्करेंसी भी ओल्ड वाले कॉन्करेंसी से बेटर है, ठीक है। फिर हम स्विफ्ट डेटा, कोड डेटा और उन सब पे भी आएंगे, बट द पॉइंट इज अगेन कोड डेटा में बहुत तामझाम है, वो जब हम स्विफ्ट डेटा पे बात करेंगे तो उस पर देंगे। बट द पॉइंट इज अगेन मोर क्लीनर, मोर बेटर, मोर रीडेबल थिंग्स है, ठीक है। और कुछ वहां पे जो लूपहोल्स थे या कुछ गैप्स थे वो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कर दिए, ठीक है। अब इवेंचुअली हमें क्या करना है, मैं जिस डिसेंट लेवल की बात कर रहा था उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब डिसेंट लेवल में आज जो यूआई किट में हमारा कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी दे दो बना लेंगे, ये कॉन्फिडेंस सॉफ्टवेयर में आ जाना चाहिए। इफ आई गिव यू और एनीवन, योर कंपनी और क्लाइंट, और इफ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग और एनीथिंग, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग सम असाइनमेंट, सम टास्क और सम डिजाइन फ्रॉम योर डिजाइनर कि भाई इस तरह का यूआई बनाना है, then you can have that confidence कि yeah I will make it in software, no issues at all with best practices, ठीक है। जुगाड़ से नहीं बनाना है। तो eventually you start with जुगाड़, you start with your hit and trial things, that's okay, completely fine। जैसे कि इमरान ने जो बताया, it's completely fine, at least he attempted, he built something, that is more important right now, ठीक है। तो initially focus on कि आप पहले चीजें ट्राई कर रहे हैं, you trying it out कि okay let's build something, then improvise it ग्रेजुअली, ठीक है। हम उस पे आएंगे कि एमवीवीएम वगैरह चीजें करनी है आपको, राइट। अब एमवीवीएम तो आप बचपन से करते हुए आए हो, यूआई किट में कर ही रहे थे ना बचपन से मतलब स्टार्टिंग ऑफ द करियर, राइट। तो वही चीज अगर आपको सॉफ्टवेयर में करनी है तो नॉट अ बिग डील, राइट। किसी ने एमवीवीएम सॉफ्टवेयर में ट्राई किया, कोई हैंड्स रेज करेगा? तो कितना डिफरेंस है, मतलब मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें। या शिगराफ, यू वांट टू से समथिंग? No, nothing. I was just saying that I have used MVVM in software. कूल। तो
Have you find some major difference or almost similar concept of MVVM? Almost similar, but it's easier to implement MVVM in SwiftUI. It's easier. Okay. Yes. ठीक है, देखो दिस इज एक्चुअली सब्जेक्टिव बट हाँ इट इज इजियर. तो जैसे होता ना कि अगर मैं एक देसी भाषा में बोलूं तो हम लोग दिल के करीब होती है कुछ चीजें, ठीक है. तो वी आर एक्चुअली यूआई किट का एक सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं ना कहीं, ठीक है. इफ यू एग्री, जो पुराने लोग हैं दे कैन एग्री, नए लोगों से मैं उम्मीद नहीं करूंगा वो चीज. तो यूआई किट इज लाइक अवर सॉफ्ट कॉर्नर. ओके, तो अगर हम लोग के दिल के वो करीब है तो थोड़ा सा हम बायस्ड होंगे उसको लेके, थोड़ा सा, ठीक है. बट वो बायस वाला चीज को भी साइड में रखना है. और अभी थर्ड पार्टी व्यू से देखोगे, जैसे कि अगेन वी डिस्कस कि SwiftUI में कई चीजें बेटर हैं, क्लीनर है, रीडेबल है एज कम्पेयर टू यूआई किट, ठीक है. तो हम कहाँ पे थे, MVVM वाला चीज, ठीक है. तो इवेंचुअली अभी आप जैसे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, टास्क लोगे, आप ट्रायल करोगे चीजें, इवेंचुअली यू नीड टू ऑप्टिमाइज इट विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है. फिर आइदर वो स्टेट मैनेजमेंट हो या फिर आपका MVVM हो या फिर और चीजें हो अभी जो हम आगे इवेंचुअली देखेंगे, या फिर कुछ छोटा मोटा एनिमेशन हो, या फिर आप कॉन्करेंसी हो, स्विफ्ट कॉन्करेंसी हो, ठीक है, या फिर स्विफ्ट डेटा भी हो, कुछ भी हो, ठीक है. मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ. डिसेंट लेवल मींस कि मेरे को कोई भी यूआई मिल जाए, उस लेवल पे पहुंचना है, विद इन फ्यू डेज में पहुंच सकते हैं. जैसे मैंने आपको बोला था 2 से 3 हफ्ते मैक्स, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. क्योंकि आप ऑलरेडी अगेन जैसे स्टार्टेड, आप iOS के लिए न्यू कमर नहीं हो, iOS नहीं बदला है, सिर्फ ये फ्रेमवर्क बदला और उसकी कुछ नई चीजें आई है, वो हमको देख के समझ के करनी है, बस इतना ही है, ठीक है. तो डोंट थिंक ये पूरा iOS सीख जाएंगे कि भाई ये पूरा स्विफ्ट को बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है और वो हम बात कर रहे हैं 2 से 3 हफ्ते में. नहीं, हम बात कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे हो और आपको थोड़ा सा एफर्ट लेके SwiftUI को अडाप्ट करना है, या एग्जिस्टिंग चीजों को SwiftUI में कैसे करते हैं वो देखना है, ठीक है. ये चीज है. तो पॉइंट इज कि हम लोग का ये लेवल आ जाए कि हम कोई भी यूआई मिले तो आराम से कर लें, उसमें एपीआई कॉलिंग भी हो जाए, स्विफ्ट कॉन्करेंसी भी कर लें, स्विफ्ट डेटा भी लगे तो वो भी कर लें. और कई लोगों ने बोले कि टेस्ट केसेस सर लिखने नहीं आते, तो टेस्ट केस वाला भी एंगल हम देखेंगे. और फिर उसमें स्विफ्ट टेस्ट वगैरह भी और फ्रेमवर्क आए वो भी विल एक्सप्लोर. ओके, यस स्वयं, वांट टू से समथिंग? Hi, Kushal. Kushal, I am having 2.5 years of experience in UI kit. Right now, I have just dived into SwiftUI. So, I'm just a new joinee. So, how can I start? From where should I start? Just want to know. I know that may be little bit off topic. So, how to start? इस टॉपिक पे मैं आऊंगा इवेंचुअली, बट अभी के लिए इतना कहूंगा सिर्फ कि हम लोग फर्स्ट सेशन में यही किया ना, एक बहुत बेसिक सा मैंने टास्क असाइनमेंट दिया आप लोगों को, एंड यू स्टार्टेड विद दैट, राइट. So even if you're not in the part of first session, but I think you have watched the recording, or even not, then you can start today also with that assignment. Okay, the point is take some anything random and start with it. Okay, and some basic stuff के लिए you have, even I have shared one basic doc, but you can go on Google, YouTube, or whatever medium, or ChatGPT or anything. The point is कि some basic stuff you should know. Like example के लिए you should know what is view modifier. Like view modifier I covered in the last session, right? Why intentionally take this? Because at least you aware about it. Awareness is important. आपको रटना नहीं है. आपको इवन पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में आपको रटना बिल्कुल नहीं है. Yes. क्यों? क्योंकि iOS में बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं. इवन प्योर iOS में मैं पुराने वाले की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग चल रहा है. तो अभी जैसे आप मेरे को पूछ रहे कुशल कोर डेटा में वो फंक्शन का क्या है पैरामीटर, या कोर लोकेशन में वो क्या, और कोर ग्राफिक्स में, तो भाई मेरे को नहीं पता है. तो मेरे को कॉन्सेप्चुअली चीजें पता है, और कल को मुझे इफ यू डू गिव मी सम टास्क आई विल इम्प्लीमेंट इट. इतना कॉन्फिडेंस है और इतनी अंडरस्टैंडिंग है, यही चाहिए बस आपको, राइट. तो ऐसी फ्रेमवर्क्स जो, या ऐसे फंक्शंस या ऐसी चीजें जो हम डे टू डे में नहीं करते, दैट्स कंप्लीटली फाइन. आपको उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है या नाम भी याद नहीं है, चलेगा, दैट्स फाइन. पर बेसिक फंडामेंटल जैसे मैंने बोला, ओवरव्यू क्या है, व्हाट वी यूज्ड टू डू इन डे टू डे ऐप डेवलपमेंट, वी कॉल एपीआईज, वी गेट द डेटा, वी प्रेजेंट द डेटा. यही बहुत बेसिक, और यही करते हैं हम लोग. और बेसिक नेविगेशन करते हैं, थोड़ा एनिमेशन करते हैं, नेविगेशन करते हैं, और मल्टी थ्रेडिंग, कॉन्करेंसी थोड़ा बहुत, बस. और क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू नॉर्मली, इतनी करते हैं चीजें बेसिक लेवल पे. और थोड़ा डेटा के साथ यूजर डिफॉल्ट कीचेन थोड़ा खेल लोगे आप, बस. वो भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती वैसे, राइट. तो इतनी तो करते हैं हम चीजें. उसी को फिर ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न लगाते हैं, उसी में थोड़ा सा फिर उसको उसमें फिर ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग डाल देते हैं. मतलब अभी तक जो यूआई किट में कर रहे थे RX Swift के साथ या कंबाइन के साथ, या फिर और अप्रोचेस होती हैं, ठीक है. अब वही SwiftUI में आ गई चीजें, पर यहाँ पे भी वही चीजें हो रही हैं, करेंगे तो वही है फिर इवेंचुअली.
तो बस यहाँ पे यूआई किट में थोड़ी अप्रोच अलग थी, यहाँ पे अप्रोच थोड़ी अलग है, पर इवेंचुअली तो होना वही वाला। यहाँ भी एपीआई कॉल होकर डेटा आएगा, यहाँ भी प्रेजेंट करोगे, यहाँ पे भी काइंड ऑफ मैप करोगे डेटा को आप। अब यहाँ पे जो स्टेट मैनेजमेंट वाला चीज है, तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए एप्पल ने आपको 4-5 चीजें दे दी है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, तो एक स्टेट ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, या एक एनवायरनमेंट दे दिया, एक ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट करके ऐसे दे दिया, ऐसे 4-5 चीजें दे दी। तो एक का काम है कि वो लोकली व्यू में स्टेट मेंटेन करेगा, एक का काम है कि पेरेंट चाइल्ड के व्यूज में स्टेट मेंटेन करेगा, एक का काम है कि पूरा एनवायरनमेंट ऐप के लेवल पे मेंटेन कर रहा है काइंड ऑफ। इस तरीके से चीजें दे दी, और बाइंडिंग करके एक एट्रीब्यूट दे दिया कि भाई बाइंड कर लो, तो व्यू में बाइंड होगा। तो बाइंड इज लाइक सिमिलर टू आरएक्स स्विफ्ट में जैसे बाइंड करते थे, उसी का कॉन्सेप्ट कहूंगा मैं इसको। अगर किसी ने आरएक्स स्विफ्ट यूज किया है तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। या फिर आप लोगों ने अगेन जैसे मैंने उस दिन बोला था, डिड सेट वाला चीज हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी रैपर्स हो गए, इस तरीके से चीजें, ठीक है। तो उससे रिलेट कर सकते हो आपकी जैसी वैल्यू चेंज हुई तो कुछ ट्रिगर होगा और अगेन रिफ्रेश हो जाएगा आपका व्यू काइंड ऑफ, इस तरीके से, ठीक है। तो मोटा मोटा पहले कॉन्सेप्चुअली इतना समझो कि हाँ कुछ तो चीजें दी है एप्पल ने कि वी एक्चुअली ट्रैक द डेटा, हैव सम ऑब्जर्वर्स ऑन दैट, ठीक है। ऑब्जर्वर वाला कॉन्सेप्ट तो हम पहले से देखते आ रहे हैं, कोई नया नहीं है, बट अब बस एप्पल ने ऑफिशियली उसको इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। पहले हम थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क और थर्ड पार्टी जुगाड़ों से भी करते थे इस चीजों को, ठीक है, पर इवेंचुअली कंबाइन आ गया। और पहले आरएक्स स्विफ्ट था, कंबाइन नहीं था, तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि वी स्टार्टेड आवर करियर विद आरएक्स स्विफ्ट, ठीक है। और कई लोग तो आरएक्स स्विफ्ट के भी पहले के लोग हैं, मैं उतना पुराना नहीं हूँ, बट द पॉइंट इज कि 8-9 साल पहले तो कंबाइन नहीं था, आरएक्स स्विफ्ट था तब, आरएक्स स्विफ्ट से चीजें मेंटेन होती थी, इस तरह की चीजें। अब वही काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर में पूरा इंटीग्रेट करके डाल दिए लोग, और दे गिवन यू ऑल द थिंग्स स्टफ। तो जो कूल थिंग्स थी वो चीजें इन्होंने कंबाइन और सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दी है एप्पल ने ऑफिशियली, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली दे ऑल्सो नो कि ये चीजें बेटर थी, पर आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे रिकमेंड नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसलिए रिकमेंडेड यही होता है कि हम कोर लाइब्रेरीज पे डिपेंड रहे, रिलाई करें, पर किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे रिलाई ना करें, राइट। दैट्स द मेन कंसर्न। सो एप्पल gives you these kind of things, state management thing, ठीक है, async await thing to more better cleaner वाला thing, ठीक है, less number of line of code, या फिर इवन ऐसा कह लो कि आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटा दी है। एक मेजर डिफरेंस और बताता हूँ यूआई किट और स्विफ्ट यूआई में। एक तो रेफरेंस वैल्यू टाइप वाला चीज देखा हमने, एक है व्यू लाइफ साइकिल में भी चेंजेस है यहाँ पे। वहां पे चीजें ना आप थोड़ा सा मैनुअली हैंडल करते हो चीजें, यहाँ पे ये बोलता है मैनुअली इतना हैंडल मत करो, स्टेट डिफाइन कर दो पहले कि कौन सी स्टेट पे क्या होने वाला है, ये डिफाइन कर दे, उसके बाद वो खुद देख लेगा। इट्स लाइक दैट, ठीक है। या फिर आप लिस्ट में देखोगे तो डिलीट करने के लिए अलग से तामझाम नहीं करना पड़ रहा है। फिर मैंने उस दिन बोला आपको इसमें वो डेलीगेट डेटा सोर्स वाला इतना सीन नहीं है, मतलब इट्स वेरी है सीन, बट इतना क्लीन वे में रखी ये चीजें, ये इतनी स्मूथ कर दी, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। तो इवन मैं उन लोगों की बात करूंगा जैसे मैंने उस दिन बोला था, इफ यू आर वेरी फ्रेशर और 1-2 ईयर एक्सपीरियंस पीपल एंड यू स्टार्टेड विद स्विफ्ट यूआई और यूआई किट आपने कभी नहीं देखा है, तो आपको आगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? बिकॉज जिन जिन कंपनीज में यूआई किट दे आर यूजिंग, वहां पे यू एक्चुअली स्ट्रगल, बिकॉज यूआई किट अ बिट टफर देन स्विफ्ट यूआई, ऐसे कह सकते हो। पर हम लोगों के लिए यूआई किट इजी एज कंपेयर्ड टू स्विफ्ट बिकॉज वी आर spend lot of time and have a soft corner and all that thing, right? So in short what you need to do, अभी भी लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए हैं, you need to complete your project with MVVM and with state management thing. स्टेट मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं है, देयर आर 4-5 ऑप्शंस। लोकल डेटा मेंटेन करना है, ग्लोबल डेटा मेंटेन करना है, और एक ऐप एनवायरनमेंट लेवल पे चीजें हैं, और बाइंडिंग हो रही है, और एक ऑब्जर्वेशन हो रही है। ऑब्जर्वेशन आई होप कि यू यूज्ड आरएक्स स्विफ्ट सो फार और कंबाइन और सम थर्ड पार्टी जुगाड़ और समथिंग, राइट। वो चीजें यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली दे दी है। इफ यू आर गेटिंग मी, मतलब रिलेट कर पा रहे हो, हम सब कर सकते हो, इतना ही चीजें दी है, मतलब इजीली यू कैन गो वॉच एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। आई विल गिव यू सम रेफरेंस, बट आई विल अगेन हाईली रिकमेंड कि आप यू गो विद द प्रोजेक्ट। और अगेन वन मोर थिंग, एक चीज हमें और करनी, जैसे मैंने बोला था लास्ट सेशन में कि what happens कि if you go through with some existing project, ठीक है, वो हम एक we are finalizing it actually, तो आप लोग को भी अपने एंड पे आप लोग यू कैन रिसर्च ऑन योर ओन एज वेल, फाइंड आउट सम डिसेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एक निकाल के लेकर आओ, ठीक है, दैट्स अ टास्क फॉर यू, ठीक है। मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लो जहाँ पे एक अच्छा खासा इट्स अ मैच्योर्ड प्रोजेक्ट, मैच्योर्ड, ओके।
एक मैच्योर प्रोजेक्ट लेकर आओ. You actually eventually, if you go through the code, you realize कि it's very fast to learning if you go through the existing code. You getting my point? तो scratch से भी build करना है, but first go with the existing code approach. It's really works well. ठीक है? तो उसमें कैसे एग्जांपल हो जाता है कि सपोज अगेन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गूगल मीट, अब मुझे गूगल मीट का इफ आई हैव अ कोड, आई कैन क्विकली चेक कि ओके व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, राइट? तो देख के इफ यू easily relate from which API they are getting this whole list of users, how they are connecting with the APIs, how this data is coming streaming API, because everything is in the code and you can see and you can relate, and then you understand better and very fast as compared to if you eventually go with the scratch. Getting my point? You can thumbs up. Okay, so one decent big project you need to find for the SwiftUI. Okay, so it's very useful for everyone for the learning purpose. And second thing, again अपना complete your task assignment. इस assignment task में अभी भी अगर मैं quickly share कर देता हूँ मैं इसको, what we are expecting. देखो until unless you not that involved or not that practicing, तो उतना learning नहीं होगा आप लोगों का eventually, right? तो learning के लिए you need to take efforts and you need to give attempt. ठीक है, तो let me just quickly share my screen once. Can share my entire screen. Just a minute. My screen visible? Right? Cool. Thanks. So if you see, this is state management. Let me stop this. Yeah, this one. Let me run this. ठीक है, जो लोग जैसे इमरान फॉर यू और द पीपल हु ऑलमोस्ट कवर्ड और ऑलरेडी डन विद द असाइनमेंट, तो नाउ स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द फंक्शनैलिटी पार्ट. ठीक है, इट्स लाइक अ स्ट्रेटजी वे राइट नाउ इफ यू सी. ठीक है, देयर इज नो काइंड ऑफ हैपनिंग हियर, just basic navigations are there, but you can implement other functionalities as well. You can implement here a Google authentication API, right, or something, right? You can do that on your own. Okay, then if you go in the login, you see nothing tile is clickable, right? No tile is clickable right now. Nothing is clickable. You do this functionality, click on it and create some UI, a detail screen you can create for this, right? Okay, similarly for this, something you can do if you want to click and something to show. Otherwise this is for only okay showable, that's fine, but at least recent job list में ये click होके open होना चाहिए and you should get some one whole JD kind of job description, right? So some detail screen you need to, I can give you some references as a design wise, but you can do on your own as well, right? Then there is nothing working on the bookmark feature. See, nothing is clickable in this. You need to implement that thing. So you can implement this bookmark functionality even for now. Local data you can implement. Okay, no API as such, but locally once app is launched and if you bookmark something, then it should be on the top and later on you can derive, right? That you can do. Okay, then in Seymour it's working, but again no detail screen and bookmark is not, so you can do that. And what about then go in this also not working. At least if I tap follow button, then it should be converted to following, right? Something or unfollow, that you can implement, right? Something like that. Then this you can ignore for now, but yeah, this also you can implement. You want to do post something, then it should open and open some text view. Okay, post it something, so that you can do on your own. Then this chat you can avoid for now, but if you want to try chat wala feature or chat kind of UI UX, that you can also implement in this. And then the last one, the bookmark job. So basically if I'm bookmarking something here, then it should go in this tab basically. Okay, right now it's not at all working, it's a purely static, but you can make it as a dynamic and functionable, right? And this delete all, again it's not functionable. You can make these things functionable and you can add your own features also. But think about it's a job app, right? It's a job searching app. So you can take an example of your Naukri, Indeed, or even your Cut Shot
If you're from India, these portals are very famous. Inspire, okay, or even AngelList. Think about it, okay, or even LinkedIn Jobs, right? So in that context, think about it. There are job listings, Indeed, Naukri apps you can see, or even your this cut short, Big Shift, Inspire, all that thing. Okay. So देखो वहाँ पे, observe the features and try to implement at least for locally, and then we'll go with the mock APIs, right? And some authentication you can provide. These things you can introduce. So eventually you will learn a lot in this, and it's very minor task, but at least you can start with this, and then we'll gradually start our own scratch project that I already mentioned in our previous sessions. So that also let me clarify. Your phone, no? Sir, can you share video of the app, or have you already? I've shared the video, okay, in the group, but again I will reshare who, because some people newly joined, so they didn't get it. Also, we have one drive folder where these assignment screenshot and video is there. So I will share the link again for that drive folder link. Okay, cool. So my point is, if you're getting my point, eventually we need to go through some basics, and again we need to figure out on our own. And you can, okay, you don't need a classroom session, but you need some mentorship and guidance and some push. That's it you need, if you really relating my point. Okay, so that I'm actually doing here basically. So go check it out. State management thing, I will share you something, some reference doc. You go through it, you understand the state management, then we'll in the next session we'll take the state management. Okay, but for now I'm eventually, even though I'm targeting this topic today, but I skip that topic because I know so many people are today new. They haven't started the assignment, and even the old people, the last session people also haven't started. So many people. So at least you start with the assignment, so you even actually relate better. Why? Because अभी मैं बात करूंगा state management पे, but if you haven't tried SwiftUI yet so far, then how you understand कि state management किस context में बात हो रही है. So, but if you already tried a bit of code in SwiftUI, then you even relate more and even better. Okay, what's the state management and why these are so many 4 or 5 types of state management attribute or properties or other approaches are there in SwiftUI. There are some concerns, there are some differences, there are some recommended things. Okay, in this case you should use this, and in this case you should use this. Okay, so that's why I'm basically recommending you, pushing you that start your assignment, take your time, and next session will have on Saturday. Okay, tomorrow is a break. You have enough time, 2 days of time, kind of 2 days of time. Take your time, complete your assignments. Who already completed, I just I give you brief which kind of functionalities you can implement, like a bookmark feature or a detail screen you can introduce, and all that stuff that you can do. Okay, and again then whichever the existing code you have, try to modify into the MVVM. Okay, MVVM is very easy. Again, we already aware about MVVM, right? In so many years, just simply convert your code into MVVM, right? And make it more cleaner code, right? That you can do easily. Khushal can show the app now. It is running. Hi, Imran, you can show the app, but wait just a minute. Let me wrap up. Okay, that's fine. So the next session on Saturday, mostly in afternoon, I will share. We'll see the timings. I will take the poll for it, and I'm expecting that you guys actually take this assignment seriously. If you really seriously, don't be wrong, but if you seriously want to learn these things, so you need to be mainly proactive and take initiative on your own. So go check it out, the assignment. You will see the Parul shared the same experience, and Imran. Really, if you once try now, and if you accomplish anything, you really feel this like enjoyable thing, and you feel better, right? Parul, Imran, right? You feeling better when you tried these things, right? So that's the point. Whoever is trying and doing something, you eventually learning these things, and then you feel okay, now I have a good understanding of it, right? So just try it with, then we will discuss about the concepts of state management, and then a sync of it is very easy again, but yeah, I will take in the next session with some API implementation, and I will do some stuff with you also in the next session. Yeah. Yes, Rishi, you want to say something? You, Henrys? Yes. Kushal, the approach which I was following, like while doing the assignment was,
Now Yeah. suppose, yeah, am I audible? Yes, you're audible. Yes, you're audible. Yeah. So the approach which I was following was like, suppose there are multiple cards which are same like on the first home screen. So I was like going to chat GPT and I don't know like how to create it. So I was just getting the idea and then I was doing the code after understanding it. So is it a good, because I I, don't know the whole thing. no problem. I would recommend one or two things. First is Apple officially have their own software tutorial. Okay? That you can also refer official docs. Second, you can have some good tutorial docs you will get. I will share some good material. You can take a reference of it. And other than that, there are some best practices are recommended. How to write a code, clean code in SwiftUI. That I would also share, and this design pattern and all that thing. So ये सब आप follow करोगे, then eventually you will have some like production level of code. Okay. So start with the basic thing, but eventually you will improvise your quality of code. And also UI बनाना है, तो if you have some basic understanding कि okay paddings देनी है, ठीक है, align करना है stack view में, जैसे हम लोग UI kit में करते थे normally, right? जो अभी करते हैं हम stack view में आप चीजें डाल देते हो अपने हिसाब से, ठीक है, राइट? अभी अपने हिसाब से चीजें डालो, देन इवेंचुअली यू रियलाइज कि ओके इसको और बेटर वे से कर सकते थे, ये इतना क्लटर हो गया है, इसको हम और क्लीनर वे से कर सकते हैं. दैट इवेंचुअली यू विल रियलाइज. और आप सोचो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ देंगे कुशल, तो डोंट गो इन दैट केस, ठीक है? वो समझो बात को. स्टार्ट विद कि एटलीस्ट मुझे जो दिख रहा है वो मैं बना पाऊं पहले. इफ आई सी समथिंग आई कैन रेप्लिकेट इट इन सॉफ्टवेयर. That is the first concern. Then thinking of ki, okay, how to improvise this code even more better or more cleaner approach I can follow. Then that is the second step. Okay. I hope you're getting my point, Rishi. यस, एक और छोटा रिक्वेस्ट था कि आप जो शेयर करते हो ना लिंक्स व्हाट्सएप पे, वो तो उसमें कैसा चैट्स भी रहते हैं ना, तो थोड़ा कभी मिस हो जाता है. तो अगर वो चैट्स जो ये लिंक्स है वो सेम ड्राइव में अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना के वो फिर क्या एक ही टाइम पे रेफर आप यहाँ पे भी डाल दो, फिर वहां पे अगर रख सकते हो एक डॉक्यूमेंट तो थोड़ा डेफिनेटली नहीं, मैं ये सब ऑलरेडी प्लान, तो ऑलरेडी मेंटेनिंग गूगल ड्राइव फोल्डर, ठीक है. उसके अलावा मैं क्या करूंगा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में और पिन भी किए एक दो चीजें, पिन वाले शायद न्यू लोगों को नहीं दिखेगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मेंशन कर देंगे, और एक जो कह रहे हो आप डॉक में भी एक डाल के रख देंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, सो एवरीवन कैन गो एंड क्विकली चेक इट आउट दोस थिंग्स. ओके जी, थैंक यू. और eventually I am planning ki once we start with the project, and if you're really actively involved guys, then we can move to Discord or Slack also. But for now we are doing these things on WhatsApp. There are some limitations of WhatsApp, but okay, that's fine for now. But eventually we can move our group to the some tech platform. Okay, so fine. Yeah, Ramalu actually will share the link again in the group. Already multiple times I shared, but if I think you join group later, then I will share it again. Okay, anything else? Whoever is not a part of the group, anyone else like that? Ramalu, you're already part of group, right? If you're not a part of group, then No, obviously, I'm not a part of. Can you please help me? yeah, sure. I will share the group invitation link here. You can just request the joining here. Yes, Biswa, you want to say something? No, I just I haven't joined the group yet. Then do join. I shared the link, I think, with you already. No, actually, I found the link in the YouTube video description. I requested the join. Yeah. Okay. So, Khushal, could you please share me WhatsApp link, because one of my friend he is not joined your group, so that's why. Sure. I shared in the chat. Okay, thank you. Cool. Okay, guys. Then I think we can wrap up today. And I would highly recommend that next time, please at least try to give an attempt. I'm not expecting 100% completion, but at least 30, 40, 60% I'm expecting. That you can do, right? So yeah, Imran, yes, you go share your screen. You can show your app. Okay, so at least 40, 30, 50, 60% I'm expecting. That is really better. So you get an idea, you get the context, and you learn more and you relate more. That is the main thing. And again, one more thing, again, I'm repeating, SwiftUI is really very easy. If you see, if I'm talking about in that context, eventually you will realize it is easy, it is more cleaner and more,
more less line of code and more easy stuff. Why unnecessary? Like from last few years we are actually having fear and uncomfort zone, but eventually you will get into the comfort zone with SwiftUI also. Okay, तो थोड़े दिन की बात है, जल्दी इसमें कंफर्ट आ जाएगा. अननेसेसरी हम अनकंफर्ट जोन में थे, इसको अवॉइड कर रहे थे, और अब जब एक बार घुस जाओगे तो फिर चीजें ऐसे ऐसे होने लगेगी. ठीक है, दैट इज द थिंग. यस इमरान, या यू कैन शो योर आप. यस, तो आपने ओके, गुड गुड गुड, सही बना लिया आप. यस, ओके. About section also you added. Cool. Yep. Good job. ठीक है, इस तरह का आप लोग आराम से इजीली कर सकते हैं एवरीवन, राइट. और इसमें और आप फंक्शनैलिटीज डाल सकते हैं डेफिनेटली, राइट. Excuse me. Yes, Biswa. Where can I find the the details about this task project? हाँ, actually, again you get in the group. I will share Okay. the group. Cool. So yeah, thanks Imran. Good job. आप इसमें again कुछ functionalities add कर सकते हो. बाकी overall good job, decent job you have done so far. Cool. Yeah. We can stop sharing a screen. So yeah, today we can wrap up, and again go and check it out, these things on your own first, then we'll come to the conceptual understanding and interview questions. We will come to that. Yes, Ikram, you want to say something? Hello. Yes. Thank you for the nice session. So I'm from Bangladesh actually. Yeah. I want to ask a question about supporting the backward iOS version. We are working, our main project is in UIKit. So from few months we are actually working with SwiftUI. So we need to support iOS 13. So in that case, there is a problem with the navigation in SwiftUI. So we are using actually UI controller, UI view controller, and designing the UI in SwiftUI and merging them with UI host controller. So is it a good approach for now for backward support? What do you think? Have you R&D on this thing? What do you think? Any other better approach you have in the mind? Or everything is working fine, but is it a better approach, or we should update the things next for with all things with SwiftUI in one navigation stack? No. Right now, I will not give you the direct answer, but eventually we'll go into R&D part of this, and you will realize that any other better approach is there, or this is the best approach you're already following. We did some R&D. It was hard to manage the navigation actually with UIKit and also the SwiftUI as we are supporting. The point is, see, Apple giving you support, right? Between these two, you're basically from UIKit and SwiftUI, you have this bridge is there, right? Bridge is there. So if the point is, first check what Apple is recommending. Are you using that thing? Or you doing? No, actually. Why no? Why you're not using the Apple recommended way? Apple recommended way, I didn't research a lot about that. What is the recommended way? There are multiple ways they show that about navigation, as navigation stack is supporting from the iOS 16. So we tried otherwise, but there was some problem in backward tracking. Maybe yeah. It's not key. If Apple recommends something, then it's a hard and fast, and you need to follow it blindly. It's not like that, right? So maybe you're already doing it a good approach, but I need to see in detail the code base, or we'll come to that part, navigation part, in coming session. So we'll discuss that thing in detail, right, in the coming session. Cool. Okay, thank you. Okay then, guys. Thanks everyone.
and see you in the group. And please be more active in the group. If I'm running any poll or vote or some thumbs up, at least give thumbs up. So it would be helpful. At least we understand if people are active and responding and listening. So yeah. Okay. So thank you. Uh, and see you on Saturday. Okay. 2 days of time. Use it whenever you get time. Try these things out, and we'll come to uh, the the next part of this series of software. Yeah. Yes, Biswa, you want to say something? Yeah, just one thing. Like I have like a pretty much like basic understanding, and I work on SwiftUI actually before, but Yeah. like I don't have much experience or understanding of UI kit actually. You are at the fresher or what? Yeah, you can say I'm fresher. Like I have Anybody? done some internships earlier. Recently passed out or currently in college? 24 pass out. So kind of just pass out. Yeah. So bro, actually right now so okay, it's fine. You are in software, at least do some decent level of software. And parallelly you can start with the UI kit, some basic stuff. So at least suppose abhi kis company mein if you are about to go, so at least in that company, if you have any existing project of UI kit, so at least you understand the code and you do some stuff there. That should be your level. Otherwise, if you say Actually, like a current company, like I don't have any relevant work to iOS. I like completely different work going on here. But I like parallelly, I am trying to keep up with iOS as well. I on a don't want. personal level, you need to do, right? I'm saying ki suppose tomorrow if you're switching your job in the iOS domain, and there you have there some legacy project is there, which has both the code because right now whatever the in the world companies mostly have very legacy projects are there or very old projects, so they have both the codes like UIKit and SwiftUI, and so many companies are still in world who completely into UIKit still. Okay, so that's why I'm saying if you planning some big companies, you will find the UIKit code for sure. Okay, so if it's very new company, very new project in startup, and the whole thing is again, there are some cases where you need to follow the UI kit or need to integrate UI kit stuff. That's why Apple provides the bridge and all that and the backward compatibility. So that is expected. At least you have some basic idea of UI kit. So I will give you some basic topics which you can start with it. Some basic doc I have with the UI kit topics and all that. So at least start with it. You can comfortable with it eventually. And so far already into SwiftUI. So make it more stronger because software eventually in the coming years it will be more dominant in the market. Right now still not that dominated, but yeah, eventually it is increasing in the last few years. So yeah. Okay, as I have like started with SwiftUI earlier, so like learning UI kit, it seems a bit difficult because SwiftUI, it is very declarative and all. Yes. Yeah. But yeah, you used to it. You will used to it. UI kit is very easy because again, for me it's easy because we are doing since last 8-9 years. But for you, eventually it will go a bit harder right now starting. But I don't say it's harder. It's actually easy, but you just know कि you're not aware about it, or again you're not used to it, or no experience as such. So that's it. Okay, I will Okay, give you some decent content material. You will eventually get used to it. yeah, It's that very will be easy. helpful. Yeah. Sure. Oh, okay, thank you. Cool. Yeah. Thanks. Okay, then let's wrap up and thank you. Good night. Take care. Yeah.